Hello friends, welcome to live classes at Acme Commerce Academy. Chapter number 2, Financial Accounting, Sem 1. The chapter's name is Sale of Firm to a Company, or in other words, conversion of a partnership firm into a company. Okay. So today we are going to start. Actually, yesterday due to some technical problem we could not come live. So today we are starting. So our first sum. In last lecture, we had covered theory and journal entries, and now today we are going to cover up with the practical sum. Okay. So your sum number 1 is A, B, and C were partners sharing profit and losses in the ratio of 1/2, 3/8, and 1/8 respectively. Their balance sheet as on 31st March was as follows: liabilities capital account A, B, and C. Then reserve creditors, assets, land, machinery, data, stock in trade, and cash. Messrs. A, B, and C decided to sell their business to the on the above date to B Limited. The lump sum amount of purchase consideration was fixed at 63,000. तो यहाँ पे रेडीमेड purchase consideration दे दिया है, so we need not find out. For the purchase of assets and liabilities of the firm at the valuation mentioned below. Assets and liabilities: land 22,000, machinery 11,000, debtors 14,000, stock 12,000, goodwill 4,000, and liabilities nil. अब उन्होंने कोई liability take over नहीं किया है. It means partnership firm has to pay the liability. Now the purchase price of land and machinery was paid by D Limited in its equity shares of 10 each for 33,000. Debtors and goodwill was paid for in 6% debenture for 18,000. And the purchase price of stock was paid for in cash of 12,000. The creditors were paid off at a discount of 2.5%. And the expenses of conversion amounted to 500. 6% debenture of D Limited were realized by the firm at par value. Prepare necessary ledger accounts to close the books of the firm and balance sheet of D Limited. Okay. Now यहाँ पे अपने को purchase consideration ready-made दे दिया है. So we will start with posting. So our first step will be transfer all assets and liabilities to realization account at book value. So let us start. Our first entry will be realization account debit to asset account. So realization account debit to assets में क्या है? Land to land. Land is 18,000. To machinery. To debtors. Now machinery की book value है 12,000. Debtors 15,000. And stock in trade. Stock in trade 13,000. And cash is 2,000. So cash account opening balance, to balance brought down 2,000. Realization outer column 18 plus 12 30,000 plus 15 45 and 13 58,000. This is your first step. Transfer all assets to realization account. Next step is transfer all liabilities to realization account. So liability account debit to realization. तो realization के credit side में आएगा. Liability एक ही है by creditors. Now creditors है 12,000. So your first step is over. Transfer all assets and liabilities to realization. Now next, अब हमारी नजरें कहाँ जानी चाहिए? अभी देखो liability side में reserve है. Reserve means past profits. ये profits transfer करनी पड़ेगी to the partners capital account. ठीक है? So now reserve 4,000 है. अब partner का profit sharing ratio कितना है? See 1/2
3/8 and 1/8. So 1/2 है, so डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/4, 4/4, so 4/8, 3/8 and 1/8. So A का रेशियो है 4000 into 4/8, B 4000 into 3/8, and C का 4000 into 1/8. So A will get 2000, B will get 1500, and C will get 500. So पहले partners capital account. Let us take opening balance by balance brought down. Capital कितना है? 18,000, 13,500 and 12,500. Now reserve की entry क्या आएगी? When reserve is transferred to partners capital account, reserve account debit to all partners capital account. So by reserve 2,000, 1,500 and 500. Now next is ये हो गया. Now next entry क्या आएगी? Purchase consideration due की entry. So purchase consideration due की entry क्या आएगी? New company account or limited company account debit to realization. So by delimited account, purchase consideration ready-made sum में दे दिया है 63,000. Right? Now second effect, first effect realization account, second effect आएगी delimited account. So delimited account debit side to realization account 63,000. Okay. Now next step. See, if you do some stepwise, it's very easy. अब next step क्या आएगा कि 63,000 आपका रियल आपने जो उसका जो consideration है purchase consideration वो तो find out कर लिया. Now how this purchase consideration is paid? वो देखो next page पे दिया है. See, the purchase price of land and machinery was paid by delimited in equity shares of 10 each for 33,000. So equity shares 33,000 के issue किए, debentures issue किए हैं 18,000 and balance amount in cash. So हमारी entry क्या आएगी? The partnership firm is receiving equity shares, debentures and cash. So delimited account credit side आएगा. So हमारी entry आएगी equity shares in delimited account, 6% debentures in delimited account, and cash account debit to delimited account. So by equity shares in delimited account 33,000 by 6% debentures in delimited account 18,000 and balance in cash. So by cash account 12,000. So 63,000. Your delimited account got closed. Delimited account आपका close हो गया. Now उसकी second effect कहाँ जाएगी? Equity shares in delimited account to delimited account 33,000 to delimited account 18,000 and next entry cash में आएगी. We have received cash from delimited, so हमारी entry आएगी cash account debit to delimited account 12,000. Clear? Okay. उसके अलावा
क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%. अभी क्रेडिटर हमारा 12,000 है. So see 12,000, 12,000 into 2.5% equal to 300 minus equal to 11,700. क्रेडिटर्स को हमने कितना पे किया? 11,700. So when the liabilities are paid, our journal entry will be realization account debit to cash account. So realization account debit side to cash account. Creditors को हमने पे कर दिया 11,700 and expenses of conversion ये दिया है 500 रुपीज. तो टोटल वी हैव पेड 12,200 कैश. इमीडिएटली उसकी नेक्स्ट इफेक्ट कैश के पेमेंट साइड में. सो बाय realization account 12,200. Clear? Now we will find out realization profit or loss, because all adjustments are over. So now we will close the realization account and find profit and loss and distribute it to the partners. So now यहाँ पे 75,000 is credit side total. 75,000 minus debit side का total है 58,000 plus 12, so 70,200. तो 4,800 का profit आएगा. So to partners capital account, A, B and C उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो नाउ A will get 4,800 into 4/8. B will get 4,800 into 3/8 and C will get 4,800 into 1/8. 4,800 divided by 8, so 600 into 4, so A will get profit of 2,400, B will get profit of 1,800 and C will get 600. So A, B and C 2,400, 1,800 and 600. So 4,800, 75,000 where your realization account closed. Now second effect, transfer profit to partners capital account. तो हमारी एंट्री क्या आएगी? realization account debit to partners capital account. So partners capital account by realization account in the bracket you can write profit 2,400, 1,800 and 600. Okay. Now our next step, immediately हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? अभी जो इक्विटी शेयर्स आए, इक्विटी शेयर्स, it should be distributed to partners. है ना? पार्टनरशिप फर्म को एज अ कंसिडरेशन क्या मिला? इक्विटी शेयर्स. तो इक्विटी शेयर्स किसको मिलेंगे? पार्टनर्स को मिलेंगे. सो इक्विटी शेयर should be distributed to partners on the basis of closing capital ratio. कौन सा? Closing capital. Closing capital minus closing capital equal to credit minus debit. Credit balance minus debit balance. Now see, यहाँ पे credit balance है. A का है 22,400, B का है 16,800 और C का है 13,600. सो अभी यहां से हमें क्लोजिंग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करना. सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करने का एक इजी तरीका बताता हूं. सी अभी ए का है 22,400, बी का है 16,800 और सी का है 13,600.
तो ये 2 जीरो चले जाएंगे। अब 2 से डिवाइड करते जाओ, 224 डिवाइडेड बाई 2 सो 102, 112, यहाँ पे आएगा 84 और यहाँ पे आएगा 68। फिर 2 से डिवाइड कर दो, सो 56, 42 एंड 34, फिर 56 को आएगा 28, 21 एंड 17। अभी इसके आगे डिवाइड नहीं होगा, सी because 17 cannot be divided by 2, 17 cannot be divided by 3, 17 cannot be divided by 5, तो उसके लिए आगे नहीं जाएगा। So our ratio will be 28:21:17. Clear? Now we will have to distribute this equity shares in this ratio. Clear? So हमारा ratio क्या आ गया? 28:21:17. So देखो A will get 33,000 into 28 upon 66. 28 upon 66. देखो 28 plus 21, 49 plus 17, 66. उसके बाद में B will get 33,000 into 21 upon 66 and C 33,000 into 17 upon 66. So इसका आएगा, पहले का आएगा 14,000, 33,000 into 28 divided by 66, 14,000. A will get 14,000. B will get, I suppose, 10,500. 33,000 into 21 divided by 66, 10,500. और C का आएगा I think 8,500. 33,000 into 17 divided by 66, so 8,500. Right? So हमारी एंट्री आएगी, who's the receiver? Partners are the receiver. तो जर्नल एंट्री क्या आएगी? A capital account debit, B capital account debit, C capital account debit, 2 equity shares in D limited account. So by A capital account 14,000, by B capital account 10,500 and by C capital account 8,500. So आपका इक्विटी शेयर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट भी क्लोज हो गया 33,000. सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड 2 equity shares in the limited account. Equity shares in the limited account 14,000, 10,500 and C है 8,500. Okay. Okay. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे. अभी उसके पहले देखो एक एडजस्टमेंट दिया है. See last adjustment, 6% debenture of D Limited were realized by the firm at par value. Par value मतलब सेम वैल्यू पे उन्होंने रियलाइज कर दिया, मतलब बेच दिया उसको. सो हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट. सो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 18,000, 6% डिबेंचर इन डी लिमिटेड अकाउंट भी क्लोज हो गया. सेकेंड इफेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट साइड टू 6% डिबेंचर्स इन डी लिमिटेड अकाउंट 18,000. ये पार्ट हो गया.
Now we will close partners capital account. अभी हमारा एक ही स्टेप बचा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, एंड देन वी विल ओपन न्यू बैलेंस शीट. So see now A का क्रेडिट साइड 22,400 है माइनस 14,000, so 8,400. इतना कैश हम पे कर देंगे A को टू कैश अकाउंट. यहाँ पे 16,800 है B का, माइनस डेबिट साइड इज 10,500, so 6,300. और C का है 13,600 minus 8,500, so 5,100. So now your partner's capital account भी close हो गया. Second effect, cash के payment side में by A capital account 8,400, by B capital account 6,300, and by C capital account 5,100. अब कैश अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली टैली हो जाएगा. 32,000 यहाँ पे 600, 900,000 बैलेंस आया 1, 6, 12, 20 and 12, 30. कैश अकाउंट क्लोज हो गया. सो नाउ आवर सम इज 99% ओवर. अभी 1% सिर्फ अपने को न्यू बैलेंस शीट बनानी है. सो सी बैलेंस शीट as on 31st March 2024. Liabilities and assets. पहले आएगा issued and subscribed capital. Issued and subscribed capital 3,300 equity shares of rupees 10 each. Rupees 10 each, 33,000. 33,000 की इक्विटी शेयर्स इशू किए ना कंपनी ने. एंड देन 6% डिबेंचर्स 18,000. एसेट्स में देखो क्वेश्चन में नीचे दिया है ना रियलाइजेबल वैल्यू. लैंड है 22,000, लैंड 22,000, मशीनरी 11,000, डेटर्स 14,000, स्टॉक 12,000, and goodwill 4,000. Goodwill 4,000. अब बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं. पहले एसेट साइड का टोटल ले लेंगे. 33, 47, 59 and 4, 63. 63,000. 63,000 माइनस लायबिलिटी में कितना है 51. अब 12,000 का डिफरेंस आ रहा है. तो 12,000 का डिफरेंस कहाँ आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000. तो बैलेंस शीट टैली. अभी जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, ऐसा होगा आंसर में कि जब एसेट और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस आ रहा है, तो इट इज एज्यूम्ड कि कंपनी ने जो कैश में पे किया है ना परचेस कंसिडरेशन, वो कंपनी के पास कैश नहीं था, तो कंपनी हैज टेकन द बैंक ओवरड्राफ्ट. तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट डाल के उसको हम टैली करेंगे. क्लियर? तो आई थिंक आज ये कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुआ होगा विद द फर्स्ट सम.
Again tomorrow at the same time, we will come live and we will do sum number 2. Thank you very much. ऐसे करते ही वाला Okay.